सो हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग प्लेसविट स्टोरी। तो आज हमारे साथ नील हैं जो कि ओरेकल में प्लेस्ड हैं, ओरेकल गांधीनगर। सो वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट अबाउट कोडिंग, हाउ ही स्टार्टेड, व्हाट वाज हिज इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एनी एडवाइस फ्रॉम हिज एंड एंड अ लॉट मोर। सो डू वॉच इट टिल द वेरी एंड एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे हाय नील, हाउ आर यू? Hi Chirag, I'm doing just great. Yeah. So like it will be great if you can introduce yourself to the audience. Okay, so I'll start with a brief introduction of myself. So I'm Neel I recently graduated from NIT Surat under the stream Computer Science Engineering, and I was part of the Placewit placement program, and it helped me to secure a placement at Oracle. So currently I've joined as an applications engineer in Oracle Gandhinagar. अरे अमेजिंग यार, अमेजिंग। सो अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेट्स गो टू द फर्स्ट ईयर ऑफ अ बीटेक। जब हम बीटेक शुरू करते हैं तो हर बच्चे को जो प्लेसमेंट को टारगेट कर रखा है कि एक चीज़ होती है कि कोडिंग कैसे स्टार्ट करें, राइट? एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि सेम चीज़ वुड हैव बीन फॉर यू ऑल्सो। सो हाउ यू गॉट स्टार्टेड विद द कोडिंग? So as we all know, like the most important thing is कि college का environment क्या रहता है. Yeah. So in my first year of engineering, there were few workshops that were organized by our seniors. तो coding club में like competitive programming वगैरह की workshops start हो गई थी. So during my first year, like I learned C++, and I started practicing DSA थोड़ा बहुत. And then I started learning web development topics. So course का ही part था. So we also learned like HTML, CSS, JavaScript, and some basics of PHP and MySQL. Amazing yaar, amazing. So the next question is, what was the thing that you kept in mind while choosing for DSA versus CP? Because it can be a very critical decision that you make, right? So how you decided that? So for me it was very clear because I was more into web development. So I focused mostly on competitive, like on data structures and algorithm concepts more rather than competitive programming. But I used to participate in lead code contest regularly. या तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि सीपी करो, या फिर कहते हैं कि केवल डीएसए से ही हो जाता है, या फिर कहते हैं कि ऑनलाइन असेसमेंट्स के लिए सीपी कर लो और इंटरव्यूज़ के लिए डीएसए कर लो। सो व्हाट इज़ योर बेसिक स्टैंड पॉइंट ऑन दैट? What I'll suggest is like CP does helps in online assessment because the faster you solve the question तो आपके chances ज़्यादा हो जाते हैं selection के लिए. So that CP is more helpful. Exactly. I personally think कि DSA is enough for most of the companies, except few companies like Code Nation और Google हो गया. तो the companies which have extensive DSA round, in order to crack them, it's more important. So CP is basically a sport. But CP you have to have some basics of DSA. DSA के basic के बिना there is nothing possible. Yeah. So CP is basically you can say an application of data structures and algorithm. So it's like a problem solving approach. So in a faster time you are trying to solve more problems, but data structures तो concepts तो आने चाहिए. Exactly यार, exactly. So how it all started with you with Placewit? कि Placewit के बारे में वो कैसे पता पड़ा? How it helped you out and how it basically is? How was your experience in that? So Placewit was like you can say a guidance to me. Like it provided a path for me for my placement preparation. Because उसके पहले भी I started my preparation a lot of times, but after going to the midway, I used to get stuck somewhere where I need to start from the starting, right? तो मैं फंस जाता था बार. तो प्लेसमेंट की हेल्प से क्या होता था कि even the pattern that was designed by Aman sir, so the mock interviews, regular session with our mentors, that helped me a lot during my preparation. और जो fundamentals रहते हैं तो that also it helped. लाइक प्लेसमेंट में जो ट्रेनिंग मिली थी तो उसकी वजह से इंटरव्यूज़ काफ़ी स्मूथली गए थे मेरे. एग्जैक्टली. और इंटरव्यूज़ के लिए स्पेसिफिकली मैंने जितने भी स्टूडेंट्स से बात करी है, दे ऑल वर लाइक कि इंटरव्यूज़ में इतनी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई थी मॉक इंटरव्यूज़ में, दैट व्हेन दे सेट फॉर द रियल इंटरव्यूज़ इट वाज लाइक वेरी इजी फॉर देम टू फ्लो थ्रू इट. I can agree with it because like Oracle was the second company that came to our campus for placement. So before it there was a company known as Incref.
उसमें भी आई वेंट टिल द फाइनल राउंड, तो वही इंटरव्यू की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाती थी विद हेल्प ऑफ मॉक इंटरव्यूज। लाइक यार अमेजिंग। तो काफ़ी अच्छा ट्रेन करती थी, तो वो कॉन्फिडेंस ही अलग होता था रादर देन द अदर स्टूडेंट्स, तो इट हेल्प्ड मी अ लॉट। एग्जैक्टली ऐसे पजल्स और कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ में, मतलब कैसे यू आर लुकिंग एट थिंग्स। एग्जैक्टली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि यार जब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो देयर आर मेनी जर्नीज विच वी गो थ्रू। कई बार हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, या फिर स्टार्टिंग में जब हम करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कैसे स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन समझ नहीं आते, क्वेश्चन समझ आते तो लॉजिक नहीं बनते, और लॉजिक नहीं बनते तो उसके बाद इट्स लाइक कि अब क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, लॉजिक बनने लग गए हैं, तो कि कैसे प्रोसीड करें। सो हाउ यू बिल्ड विद दैट, अपने मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी कैसे कंटिन्यू रखिए इस कोडिंग जर्नी में? जस्ट दैट आई डोंट गेट डीमोटिवेटेड, तो आई स्टार्टेड विथ ईजियर प्रॉब्लम्स। तो हैकर रैंक में C++ सर्टिफिकेशन होता है, तो आई स्टार्टेड सॉल्विंग ईजी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द कैटेगरी इन दैट, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ मेरा। फिर आई वेंट टॉपिक वाइज ऑनली, तो DSA में जैसे व्हेन स्टार्टिंग विद एरे, तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं लाइक लॉग ऑफ अ शीट, या तो जो हमें यहाँ पे प्लेसविट से मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग to develop my own approach. फिर I used to code the same as. Amazing यार, amazing. Pseudo code वाला approach always helps a lot in most of the DSA question, तो उससे मतलब clarity काफ़ी आ जाती है on the question. Also मतलब इंटरव्यू में code, हाँ, जैसे DSA में कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमें कर रखे होते हैं, और इंटरव्यू में अगर वही क्वेश्चन हमसे पूछ लिए तो कई बार हम फंस जाते हैं कि क्या हमें आते हुए दिखाना चाहिए, या फिर हमें दिखाना चाहिए दैट वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स इट, इफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? तो उस केस में आप कैसे डील करते हो? दिस थिंग हैपेंड विद मी इन माय ओरेकल्स फाइनल इंटरव्यू। तो जो सुडोकू का क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने GFG के जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस होते हैं उस पर सेम क्वेश्चन पढ़ा था। द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड, इट वाज रिगार्डिंग सुडोकू, सिंगल स्कैन में वी नीड टू आइडेंटिफाई वेदर द सुडोकू इज वैलिड और नॉट। तो वो ये कि आई न्यू आई हैड सॉल्व द क्वेश्चन बिफोर एंड, फिर भी आई एक्टेड ऑल इनोसेंट की पहली बार क्वेश्चन देखा है, एंड आई डिस्कस इंटरव्यूअर एज यूजुअल। फिर उनको जो अप्रोच सही लगी, एंड आई स्टार्टेड कोडिंग। Yeah, exactly. This really happens, yeah. So we have had discussed a lot about how you started with coding, what were the difficulties you faced, how Placewit helped you out, and everything about it, right? So one question that I want to ask is, how is your internship or the current job that you are doing is going on? How is the experience till now? So I joined on 27 June, so it has been almost 3 weeks since I joined Oracle. And regarding my experience, so we are still under training. So it's a new place for me. Like, it's first time for me going corporate. So the place is very exciting. Yeah, but I miss Pune or Bangalore, that's for sure. But still, Gandhinagar is still having a lot of potential. So looking forward. Yeah, exactly. So at the end, I want to ask you an advice from your end to your younger self, or to all the students who are going to proceed in the path as you did. Any advice that you want to give them? One thing I'll suggest is just keep your head down and keep working hard. It's easy if you put in continuous efforts, then you'll obviously get the result, and you'll also get placed in a very good company, and you'll be sharing this same success story just like me. So yeah, go ahead, check the Placewit's page out, and go through their hiring policy, and when their batches are starting. If you are someone like me who was not sure, who needed someone like to guide through the placement preparation, then definitely I would suggest that placement would be a right option. Amazing, man, amazing. Rightly said. At the end, like, you have to work consistently, and consistency is the key. So thanks, Neel, for such an amazing session. I wish you all the luck for all your future endeavors, and thanks. Thank you, Jay. Best of luck, everyone, for your placement preparations. Here at Placewit, you get a dedicated team of mentors and instructors from top companies who will support you until you are placed at a company that you actually deserve. You will be taught with a battle-tested curriculum, including everything that is required for an amazing placement, like coding, computer science subjects, projects, resume building, mock interviews, etc. And the best thing about Placewit is that they offer you a job guarantee without any upfront cost. This simply means that you can join Placewit and start the preparation for free with a guaranteed job.
So check out the link in the description if you want to get placed in a top company. Thanks for watching.